Hello everyone, I welcome you back to the platform of Navigate Prime and today we are going to continue। हम कर रहे हैं कुछ अच्छे और बेहतरीन सवालों की तरफ। हमने काफी ज्यादा अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं हमारे प्रीवियस अभ्यास सीरीज के अंदर, बट टुडे आई वुड लाइक टू से दैट जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, सारे क्वेश्चंस ने हमारे एक बेस को क्रिएट कर दिया है। हम सबको एक एग्जाम माइंडसेट के साथ प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो ले देकर इन्हीं के आसपास कुछ आएंगे। अगर न्यूमेरिकल होंगे तो वो कहीं ना कुछ वैल्यू कर कर ही होंगे, क्योंकि जितना एग्जाम की हमारे पास स्किल्स दी हुई है, जितने एग्जाम का हमने एक ऑन एन एवरेज सिमिलर एग्जाम्स का पैटर्न देखा है, तो उन्हीं के एनालिसिस पर हम ये बात कराएं। So I guess today will be the last session and today we are going to do wonderful questions, but the objective is not bring the tricky questions mind. The objective is to make sure कि हम हमारे एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट अप करें और आगे बढ़ते रहें। आई होप आपने अभी तक जितने भी सेशन सबसे अपने शॉर्ट नोट्स क्या होगा, अपनी जिन क्वेश्चंस में आप फंसे थे सारे क्वेश्चन आपने कोई मिस्टेक कॉपी बना रखी हो, आप सारी चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट यू आर एन गुड स्टूडेंट एंड इफ यू हैव स्टडीड वेल, अटेंडेड ऑल द लेक्चर्स, तो इट इज वेरी दैट आप 70 कर लोगे। लेकिन उस 70 से तो आपने अटेम्प्ट आपकी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी में हुआ होगा कि 75 तो 100 आउट ऑफ 100 आपने अभी तो 100 किए होंगे, या फिर आपने अगर कर भी लिए होंगे तो शायद आपकी है वो काफी कम हुई होगी। तो कुछ ना कुछ एक स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस थोड़ा सा तो चेंज हुआ होगा। तो वो 75 में से मान लीजिए आपके 60, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कहीं आपको वहां हेम्पर करेगी। तब हमें अब उन जिनको थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल में जाता है, जो अब हमें उनको अटेम्प्ट करके अपनी रैंक को डिसाइड करना। जितने 60 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं 60 ऑन एन एवरेज, तो हाँ, आप जब परसेंट की बात कर रहा हूँ तो आप कट ऑफ पे तो काफी ऊपर करनी है। इसी के लिए ये सेशन है। तो हम अब करते हैं सारी बातें। इतनी देर मैंने जो आपको ज्ञान दिया है उसका मेन था कि बस यूपीएससी जाएगा उतनी देर कर बैठ जाएंगे। तो हमने हमारा ज्ञान दे दिया है, अब हम उस ज्ञान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, so we will move forward without। दो बातें और बतानी है कि अगर आप ये जो आने वाला दिसंबर बचा हुआ है, क्योंकि हमको भी आधा निकाल दिया है और ये अब आपके ऊपर है, आप खुद का इंटरेस्ट आपने फर्स्ट हाफ ऑफ को कितना यूटिलाइज किया। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं यार मैंने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दिया है, तो रिमेनिंग हाफ जो ईयर आपका बचा हुआ है उसमें वापस से चाहिए, नहीं तो फिर अगले 2027 का कुछ बार तो दूंगा, इस बार सीधा यूपीएससी का ये करूंगा वो करूंगा। हवाबाजी नहीं करनी है, बातें कम काम ज्यादा है। तो अगर आप एमपीपीसीबी, गेट, यूपीएससी, जेई, आरआरबी, जेई और ये सारे तमाम एग्जाम लाइंड अप है, क्योंकि हमारे आने वाले समय के तो हमारा नेक्स्ट का जो हुआ आधा हाफ पोर्शन, अगर उसमें आप प्रिपेयर करते हैं बात आप जा सकते हैं। मान लो लक बहुत खराब हुआ, एक नहीं हुआ, तो 1 2 3 4 5 और ना जाने कितने 7 8 9 10 एग्जाम लगे हुए, एक में खराब होगा, दो में, 10 में से इतना बुरा तो नहीं होगा कि 10 एक भी ना हो। और अगर इतनी अच्छी ये कहना है, गेट का एग्जाम प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट ये बहुत अच्छा बैकअप आपको दे देगा। आप 2 साल तक, अगर आप खाली बैठ के 2 साल प्रिपेयर करते हो तो आपका रेज्यूमे या आप जो भी सीवी बनाते हो उसमें आपका लाइफ का थोड़ा सा डाउनफॉल ही दिखेगा कि 2 साल बेरोजगार थे। गेट देने के बाद मास्टर्स करते करते 2 साल, तो अगर मान लो सिलेक्शन नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, जो साल जो आप 6 महीने में, तो आप 2 साल करो, आपको पैसे हैं और आपका होता है।
तो ये सारे कोर्सेज डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, सारे के सारे एसएससी जेईई, अगर ये न्यूमेरिकल बेस्ड और हल्का सा न्यूमेरिकल और सब इंजीनियर प्योरली थ्योरेटिकल, तो अलग अलग अपने कैलिबर को नापते हुए आप जिस आते हैं आप उस बैच को एनरोल करें। सारे डेडिकेटेड हमारा ऐप है जो है तैयारी करें। आरोहण बैच में अगर आपको एमपीपीसीबी है क्योंकि हम टेक्निकल ग्राउंड से हैं, हमें जीके पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारे जो भक्तिदीप सर है, सर इज ऑल्सो फ्रॉम बैकग्राउंड, he has a very good grasp on yes, he has a very wide experience और उन्होंने जब they have a very good experience। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं, आप जानते ही हो, उनके पास एक कुछ ऐसे खूब है जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, उनको कैसे एमपी करना है, कैसे चीजों को अप्रोच करना है, कैसे याद करने वाली चीजों को समझना है, he has that art। और इसलिए आप उन पे ही अगर आपका टेक्निक स्ट्रॉन्ग है और आपको सिर्फ और सिर्फ केस वाला पोर्शन पढ़ना है, तो आप इसको ये वाले बैच को ले, अदरवाइज आपके पास कंप्लीट कोर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड तो या तो फिर बैच भी। तो बस ये सारी बातें हो गई हैं, तो शक्ति बैच, तो इलाइट बैच और ये सारे बैचेस हैं। अब सारे बैचेस की बात कर ली, फालतू की बातें डन। क्वेश्चन करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी पर है। Students from our batch have also joined। तो अब यूट्यूब और ऐप पर साइमल्टेनियसली चीजें चलेंगी। तो वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इज दैट विच केमिकल इंडिकेटर, कौन सा वो केमिकल इंडिकेटर है दैट टर्न्स फ्रॉम वाइन रेड टू डिस्टिंक्ट क्लियर ब्लू। तो वाइन रेड से डिस्टिंक्ट क्लियर ब्लू कलर में होता है चेंज एट अ पीएच ऑफ 10। टोटल हार्डनेस टाइट्रेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है हमें। ईडी के टेस्ट के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। उसमें भी बोला है कि कलर जो है कहाँ से कहाँ चेंज होता है, या फिर कई बार रेड से ब्लू भी, वो भी किस पीएच पे वो वैल्यू भी बताती है। आपको बताना है इंडिकेटर का नाम क्या है। इंडिकेटर का नाम क्या होगा, आराम से बताइए। आई गेस यू गाइज आर नॉट गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इन बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द लैंग्वेज के साथ खेला जाता है। तो ये कीवर्ड जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है और फिर चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी ब्लैक टी ऑल्सो नोन, के बारे में हमने बहुत गहन डिस्कस किया हुआ है। फॉर्म्स अ वाइन रेड कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मल्टीवेलेंट, क्या मल्टीवेलेंट, क्या हार्डनेस जिनकी वजह से होती है मल्टीवेलेंट। आप लोगों को हार्डनेस है और ईबीटी की खास बात यह है कि इन्हीं के साथ रेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ऑल दी हार्डनेस आयंस आर रिलेशन अगर आपको पता हो तो stated by EDA at a pH then the indicator return to अनकॉप, मतलब क्या होता है, पहले तो हमारे पास जितने हार्डनेस रेड कॉम्प्लेक्स के बाद फिर ईडीटीए है, ईडीटीए इस को वापस अपने ओरिजिनल खाने को बोल देता है, तो वापस से काट के अपने नॉर्मल स्टेट। और कभी आपने अगर लैब में टेस्ट किया होगा तो वो पाउडर फॉर्म एकदम आप डालते हो। while orange are the pure not metal ion, ये छात्री का याद रखें। नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पैरामीटर यू टू size the cross sectional plan area of type 1 plain sediment। what is the primary physical parameter, primary used to size the cross section of type 1
सरफेस ओवरफ्लो रेट जिसे बार भी कहते हैं, हाइड्रोलिक रिटेंशन आरटी, वॉल्यूमेट्रिक वियर लोडिंग रेट या फिर कल बताइए। आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर। भाई आंसर दो, यू चैट पे दो, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे आंसर मत दो यार, व्हाट्सएप पे परेशान करने आ जाते हो, व्हाट इज दिस। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो जब भी हमें साइज, क्रॉस सेक्शनल बात करनी है तो ध्यान रखना है किसकी बात होगी, सिर्फ रिटेंशन टाइम की बात नहीं होगी, वॉल्यूमेट्रिक वियर लोडिंग रेट की बात नहीं होगी, ये मतलब होना चाहिए, और कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन को सरफेस ओवरफ्लो रेट आ रहा। योर आंसर अकॉर्डिंग टू हिज सेटलिंग आइडल इज कंप्लीट ऑफ इट्स डेप्थ, डेप्थ से डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, डिपेंडेंट है तो हमें ऑप्शन तो एंड रिलाइज सरफेस एरिया वाया वन बाय सरफेस ओवरफ्लो रेट, मतलब हमारा डिस्चार्ज आ रहा है कितने पर यूनिट आ रहा है, उससे हम, हमारे पास जब ये डेटा रहता है तो अगर हमें डिस्चार्ज पता है तो हम निकाल लेते हैं, एरिया पता है तो डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। अगर हम इस ओवरफ्लो को एज अ डिजाइन पैरामीटर हमें कम रूल पता हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू ऑपरेशनल कंडीशन माइंस दी सेल्फ क्लीन वेलोसिटी साइड अर्बन सैनिटरी पर पाइप डिजाइन लाइन, तो कौन सा वो पैरामीटर है या कौन सी वो यूनिक ऑपरेशनल कंडीशन, पहले तो ऑपरेशनल कंडीशन, उसमें भी यूनिक वाली जो सेल्फ क्लीन वेलोसिटी साइड अर्बन सैनिटरी पर पाइप डिजाइन, एन आंसर ओवर हियर। तो analyze the options. Number one is the velocity that scouts out and transports the settled solid particles, not built. बात समझ, the maximum velocity that limits the physical pipe average, the velocity that keeps the system complete aerobic, the minimum velocity achieved only at the dry weather। हमें पहले तो वो यूनिक ऑपरेशनल कंडीशन, वो भी इस सीवर पाइप सिस्टम पर, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर एक साथ, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, वेलोसिटी दैट स्कार्स आउट एंड ट्रांसपोर्ट द सेटल्ड सॉलिड पार्टिकल्स, जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो कि अराउंड होती है इज डिजाइंड ensure that solid particles that settles due period are dynamically scouted out, scout मतलब निकल जाना, and transported downstream preventing the pipe clogging। तो ये देकर हम ये बताते हैं ना, सेल्फ क्लींजिंग मतलब खुद ही कर दे, जैसे घर के अंदर भी होता है ना कि जब वो डिग्रेड होती है तो सेल्फ क्लीन मैकेनिज्म होता है उसका, वापस से फिनिश कर जाती है, वैसे और what structural process parameter describes the ratio of the settled sludge dry weight of the of that sludge grams per liter। क्या होगा, को दे दी है और हमसे बोला गया है कि तो बता दो वो सेटल्ड स्लज सेटल हुआ टू द ड्राई वेट स्लज इन ग्राम
ml पर ग्राम, ml पर। आपको कोई सा एक इंडेक्स याद आ रहा होगा? को एक इंडेक्स याद आ रहा होगा? यहाँ इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वी आर गेटिंग द आंसर है स्लज वॉल्यूम है। पर्टिकुलर वेट का हमारे पास पर्टिकुलर वेट है, हम जानना चाहते हैं कि जब तो हम उसको वॉल्यूम पर यूनिट निकालते हैं। इसका पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जो हम जानते हैं, लेकिन evaluates the settling characteristics पर हुआ है MLS। A normal well settled touch has a touch volume index between, ये आपको याद रखना है, higher number touch bulking। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास काम का हो तो ये ml बहुत कम, एक ऑप्टिमाइज्ड हो। नंबर 5, और टॉक्सिक, कौन सी वो टॉक्सिक anaerobic state of solid waste decomposition। तो हमें ये तो पता है कौन से मतलब जो जनरेट हो रही है गैसेस उससे भी उस वाली बता दो जो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस देख दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी 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 सिमिलर। दो टॉपिक्स हमने टॉपिक से क्यों हमसे पूछे जा रहे हैं सेम सवाल, क्यों एक्सपेक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजर मान लो, तो उस सिलेबस के पार्ट के हमको इतनी अवेयरनेस हो, हमने सिर्फ टेक्स्ट याद करने सवाल आते हैं, सेम पैटर्न याद करने, क्या हम थोड़ी हम सोच सकते हैं। तो अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, क्या किया होगा, सॉलिड वेस्ट जब लैंडफिल का टॉपिक आया होगा, अगर आपने शॉर्ट नोट, अगर आपने लैंडफिल टॉपिक के कई चीजें आपने अपने और आई एम डेफिनेट और की जब बात की होगी उसमें भी आपने मेक श्योर किया होगा कि अरे एंथ्रोपिक के अंदर इतनी प्रकार की गैस है, जब वो गैसेस के बारे में कुछ लिखा गया है तो उनके साथ एक साइड इन्फॉर्मेशन है, और वहां पे डेफिनेटली आप अपने आपको करेक्ट आंसर का विथ अ कंप्लीट लॉजिकल। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या प्रॉब्लम है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पार्शली मतलब उसको और एक वो स्टेबल फॉर्म में जाएगी CO2 में, ठीक है, तब ये ऑक्सीडाइज नहीं है, पार्शली ऑक्सीडाइज है। तो मान लो हमने उसको इनहेल करने के बाद क्या होता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, सिंस इट इज पार्शली ऑक्सीडाइज तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में अपने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगी। इट विल टेक एन ऑक्सीजन इन कंप्लीट सेल्फ एंड बिकम स्टेबल। होगा क्या कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी उसमें से तो इसने अपनी डिमांड पूरी कर ली, हमारी बॉडी की डिमांड कैसे, एंड इट कैन लीड टू अ फेटल इवेंट कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें जन हानि, एक व्यक्ति बहुत बुरी स्थिति हो सकती है जिसमें डेथ भी कई बार इन्वॉल्व होती है, जिसके आपने कई बार केसेस समझे होंगे। लेकिन हमें अभी ग्रीन हाउस गैस क्या हुआ है, मतलब लैंडफिल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 से 60 एंड 40 से 50 कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रोड्यूस्ड बाय मीथेनोजेनिक, ये सारे बैक्टीरिया वगैरह सारी चीजें हमको पता है। ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक से भी हमें बात करनी। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। व्हाट कंपाउंड सर्व्स एज प्राइमरी स्टैंडर्ड indicator for validating the presence of fecal contamination in a waste disposal work? What compound serves as the primary standard chemical for validation of fecal contamination in a water disposal work? We all have done these experiments in our laboratory, and it was also in the curriculum. Even if you don't have done this, performed this in the lab, but you must have written in your uh, that lab manual. Until or unless you not have given it to your juniors by giving high high. That was the situation. It's very difficult to answer this question. But if you have even studied or just have a glance on the topics from your notes, you will be able to at least give an guessing answer also. E. coli, most of the people don't know its full name, but E. coli is going to help you this, and most probable number, and there are certain other tests which we have done to know what actually happens. Remember, we culture these fish by providing them suitable nutrients, and if they shows their presence, coli is not harmful, but it is going to show to that there is the presence of pathogens. So we don't directly get to know that what types of pathogens are there, but we can know by the presence of E. coli. E. coli acts as an indicator, and it indicates us that yes, there are some presence of that might be harmful. E. coli is a classical coliform bioindicator. It is harmless in strains, but serves as a highly reliable marker because it originates from the warm blooded animals, and तो ये सारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्स वगैरह मतलब इतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन वो इसके पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, which device is explicitly classified as an inertial collector used to capture coarse particulate from the industrial to gases? कौन सा वाला है? और हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल सारी चीजों पढ़ा था, और कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एक्स थी, वाई थी। टीम एक्स के अंदर पर्टिकुलर कुछ माइक्रोन्स में कोई पार्टिकल्स थे, और वाई में थोड़े से हाई मतलब हाई साइज के मतलब कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स थे, and those particles were there, and we have to decide that what should be the sequence of units, and the decision was based on the economy and the of different. So obviously the answer is going to be cyclone separator. Electrostatic precipitator is highly useful when we have very fine size particles which can be by the force of electrostatic and everything. So cyclone separator is going to be the explicit classification because of the explicit classification asked over here, the inertial collector. So the cyclone separator, what it does is, on the basis of the principle, it tries to collect the coarse grained particles, and this is how the things are. Cyclone separator utilizes the centrifugal force and the inertial difference of force, and the dense particle and coarse particles get force outward against the wall and get separated out from, and that's how the principle of cyclone precipitator works. Separator works. What is the stoichiometry ratio of oxygen required to completely oxidize 1 mole of pure methane gas into carbon dioxide and water? So we have seen
types of question like how much oxygen is required to oxidize sucrose or glucose. So we must know the formulas of sucrose and glucose. Glucose is very well known. So sometimes if they ask the sucrose, since the exam, if your exam is highly oriented on environmental engineering itself, so they don't have the liberty to ask the question RCC and other things from the structural part. So they have to go into depth of the environmental aspects. So should be aware of names and at least their formulas, how they are being written. So how this question is going to have methyl plus, since we have just carbon, hydrogen, will get carbon dioxide and air as output. Have this chemical over here. Have 4 plus. Now we have to balance this equation. The process is same, don't need to do anything. Since there is one carbon, product side have one carbon. The 4 hydrogens have to make, we have to multiply H2 by 2. Now we have 4 hydrogen left side and on carbon is hydrogen. Now it's time to balance the oxygen. Have 2 oxygen here and one over here. Total we have 4 oxygen. Here we have to, I guess we'll get the answer from here itself. There is nothing, think 1 mole of in requires 2 moles of, simple as that. You have to do all the this manner, nothing, you have to follow this forward. Question number 9, what atmospheric environmental lapse rate trend occurs when the ambient temperature profile rises altitude? What atmospheric environmental lapse rate trend occurs when the ambient temperature profile rises with, when the ambient temperature profile rises, ambient temperature profile increases altitude. The answer is very simple over here. Since we are seeing a trend where ambient rising with increase in the altitude. So as the altitude is increasing, temperature, we have obviously seen that there is a condition where you see lapse rate. A standard lapse rate involves being, as you go up, what is being observed. As we go up, we feel temperature. An atmospheric inversion occurs when warm air blanket cools the air below, creating a negative lapse rate that traps the sun intensively.
So this is the basic. More than that, inversion means exactly opposite. What is which dominant chemical form of the possesses the highest power when dissolved in pure water? So we have to know the power of dissolution. Then you have to choose which one of the following possess the highest disinfectant power. Obviously, when dissolved in the plain water. Why they are saying plain water, plain pure water? Because they are giving you a hint. Because different type of disinfectant we have seen, they are highly influenced with the pH. So every word is a hidden hint, and they are giving us a hint of pH is almost around 6. At almost new plain pure water have of 7. Alok Sahuji has given the answer A. So we will move forward, and he has given the correct answer with exactly precisely correct. HOCl is roughly 50 to 100 times more effective than OCl minus ion at killing the microbes because it lacks a net negative charge, allowing it to charge back well. Question number 11. What type of biological waste? So, biological wastewater treatment sector configuration is standard modern moving bed biofilm MBR. What type of biological wastewater treatment reactor configuration is standard modern moving bed biofilm? One. Answer is given as A. R. क्या होगा? Hybrid edged suspended growth system. I was about to tell something, but the answer is here. The MBPR utilizes the specialized plastic carriers that remain suspended inside an aerated bin. The active biomass grows attached to the combining it of both systems. So basically, you will find types of. I have done this experiment very intensely. Have a unit. You have to first decide which type of plastic or the medium we need. We have two types of system: attached growth system and suspended growth. So in attached growth system, the decomposition or anything, whatever process is happening with the organic matter is being done on a fixed surface. Okay, that is known as attached growth. Suspended growth means the organic matters are in suspended form and its decomposition is happening in suspended form. But here is a technique where we have suspended the surface on which the process is happening, so it keeps on moving at a very slow rate. बहुत slow rate होता है, almost seminar condition you have to maintain over there, and on these particles, on these small particles, the organic matter are being there, and
the decomposition happens. So the media on which they are attached is suspended, but the organic matter is being attached with the media. So it has a dual system. Question number 12. What is the theoretical ratio of 5-day ultimate carbonaceous COD represented by this? For the standard domestic water, oxygen is 0.1 per day. Said answer is A. Alok ji has given the answer. Sorry for this blunder in the question, but you just need to put these values and you will get a decent answer. Most times there in our mind we just don't need to do the calculation. Almost 68% of the total ultimate. That is what you guys need to know. You are not going too much into that because that is a very basic calculation. Question number 13. Which heavy metal content is for causing the painful skeletal condition known as thigh whatever it must be remembering same Mata, cadmium, mercury, arsenic, lead. So the answer is A, cadmium. Chronic cadmium poisoning causes severe and bone fracturing along with damage, famously documented as given in the question. One, mercury causes the Mata. Cadmium, you will remember that cadmium is what noise pollution index rates the sound measurement match the specific sensitivity frequency bands of the one ear. Which index? What noise pollution index weights the sound measurement to match the specific sensitivity band of the one ear? Yes, there is a weighted decibel scale. The decibel scale A filters out very low and very high frequency during the response of the human ear to moderate voice levels. It is the standard for environmental noise, and on this level itself, the provision of uh, the level or the range of the noise which is acceptable in the industrial area or the residential area or low noise area, the evening time, or sorry, in the daytime or in the night time, all of these are being configured and calculated deliberately. Of this, must remember, we always know that it's well, but on what scale it is. Okay. Number 15. What chemical coagulant compound is known as copperas in the industrial waste treatment sector? This is one of the easiest question, and Alok Sahuji has given
Answer is C, given by Sahu ji. Are you sure, Alok Sahu ji? The answer is not. The answer is ferrous sulfate. Copperas is the traditional common trade name for the heptahydrated ferrous sulfate. Despite the prefix copper, it contains no copper and is in iron covalent. Alok ji, question number 16. What physical operational parameter represents the theoretical time water droplet spends inside a settling? We have done this question multiple times, but this time the question's language is being changed and modified, but the sense is completely same. What physical operation parameter represents theoretical time? Theoretical time, water droplet spent inside a settling basin. These classes we have done this, but be willing to answer. Alok Sahuji has given the answer. Okay. Hydraulic retention time obviously means and retention time has nothing to do with surface. Have already done two questions back about the surface time of concentration is mostly related to the hydrology, and that too in hydrology when we draw the time of concentration, like you have the catchment and the rainfall per year, and the are being going, this is the outlet. So a drop going from the highest point at the extreme point from the outlet, the time taken for that drop to reach the outlet is known as a concentration. Now the answer is A, and we have discussed nothing but which layer of the atmosphere contains the protective ozone, shields the planet from the solar ultraviolet. Which layer of atmosphere contains the protective ozone layer that shields the planet from the solar ultraviolet radiation? Which layer of atmosphere contains the protective ozone layer that shields the planet from solar ultraviolet? Stratosphere, so ozone is going to be stratosphere. The option is stratosphere holds the highest concentration of which absorbs the heat and UVC solar rays. Atmosphere ozone by contrast is a toxic air pollution. So if it is in stratosphere, it is going to help you, but if it is in troposphere, it is going to create some problem as it is a toxic
pollutant. So the presence of ozone, if it is in different layers, must be aware of that they almost works in a very antonym manner. क्या कहेंगे, opposite तरीके से काम करेंगे. What chemical causes the permanent hardness in water system when paired with calcium and magnesium ion? What chemical species causes permanent hardness in water system when paired with calcium or magnesium? Very easy question. This question can be done by a student from school itself. The answer is A, and you might be observing that you are getting permanent hardness is caused by sulfide and nitrate salts of the calcium and the magnesium cannot be broken down into simple by simple boiling or anything. So, can you tell in the comment box which method which we do? So, the permanent which sorting mechanism forms the primary technical foundation for the segregation for segregating the ferrous compound from the with sorting mechanism. Sorting मतलब अलग अलग कर sorting, bubble sorting एक technique होती है computer science में. In coding we try to sort the data. Bubble sorting is, there are different methods, but how is this forms the primary technique of ferrous compound is very easy and it's a very easy answer. You have to separate the metallic ferrous compounds. Magnet separation what to help you. Some people get confused with the eddy current separation. To get confused, A is non-ferrous metals. Metals which do not possess ferrous are being removed with current of uh, short notebooks or something like that, where you just go through one line form where non sometimes you don't find the non-ferrous and you are okay remove the eddy current, but must be aware that magnet ferrous metals and non are being removed by eddy. What chemical compound is formed when the carbon monoxide binds tightly to one hemoglobin and causes the sugar? समझ जाओ. We have done about this concept. We have already had a discussion. Still, I'll wait because today is but a confidence. We have done the most highest difficult level questions in the last session. Want to challenge yourself, go through that session and check how many questions solve, because that was the most toughest found is carbon monoxide. Obviously, your answer is going to be some people might get yes, but also not carboxylic spin. Are correct. This blocks the oxygen transfer. Chemical suffocation has a affinity, मतलब affinity मतलब चाहत, and stronger than the 20. What hydraulic parameter? What hydraulic parameter describes the flow rate per unit and provide a flow rate per unit length. So we have already discussed about
large length as. Now we need to talk about parameter is rate per unit. Flow rate per unit length. Yes, obviously the answer is going to be what they want to know is you have ever visited a treatment plant, you will have seen that there is a system top view, top view, and the water is being overflown from here. That overflown, or you have some water flow that, and from the perimeter water is being, this is the per unit what we are perimeter are the water is going out, going at the object, understand that from the parameter thing, and the water is out from channels. Okay, so we are loading your correct answer. So at this point I would like to say that we have done sufficient quantity of questions. Best of luck for your future, and I hope you get selected in the exam which you are targeting. If you have any doubt or query, contact us on this Telegram channel, and also this is our WhatsApp channel, and you can have your query resolved. If you want to know something specific about the exam, you can ask me. I am here for few minutes. Ask anything. Ask to our app, download our app, and you can have all the queries resolved, or you can call on this. So, or if you have any doubts or any queries, you can do the, you can comment. I'll see. So, thank you so much for this session.